A very good morning, children. Today we'll start our session with a notice writing. So, first of all, we'll learn what is notice writing. You can say a notice writing is a brief communication written in a formal style to convey important information to a select set of people or a close group और अ कम्युनिटी. सो बेसिकली आपका जो नोटिस राइटिंग है किसी बड़े समुदाय को एक बार में जो है कोई समाचार देना है, कोई न्यूज़ देनी है, किसी चीज़ के बारे में बताना है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है. सो नाउ विल लर्न द फॉर्मेट ऑफ फोटो नोटिस राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेंशन the issuing authority name. So the issuing authority, what you need to write, you need to write the name of the authority who is issuing notice. जो भी ये स्कूल की तरफ से लिखा जा रहा है तो स्कूल का नाम आएगा, किसी कंपनी की तरफ से लिखा जा रहा है तो कंपनी का नाम आएगा, एंड सो ऑन. देयर आफ्टर इट इज़ फॉलोड बाय नोटिस एंड इट शुड बी कैपिटल इन कैपिटल लेटर. सो ये आपका जो नोटिस लिखा है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए. देन डेट, उसके बाद आपका आएगा हेडिंग, और उसके बाद आएगा कंटेंट. कंटेंट में आपको क्या लिखना है? कंटेंट में आपको लिखना है, स्टार्ट करना है हमेशा, इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स. अगर किसी कंपनी में है तो इट इज़ इन्फॉर्म ऑल द कलीग्स ऑफ आवर कंपनी. ओके. देयर आफ्टर सिग्नेचर. इन द सिग्नेचर you need to mention the name of the particular person to whom we have to contact in case of any query. So now we'll learn in this session we'll learn how to write a notice on lost and found. You are a student and if you have lost something or if you have found something, we'll learn in this session to how to write a notice for the school notice board. So look at the but before that we'll learn some few more points. The 5 W's that should be covered while writing a notice. First one is what is notice about. So what is notice about is what in this you have to tell that why you are writing notice is about. What is the notice about? Then where it is where in this session you in this session you have to basically it is used in the notice writing based on event organized. Okay. So here you have to write where it the particular event will be organized. Okay. Now when, it's very important if the notice is based on event organized or some kind of function, then you have to write when it is going to when it will be going to organize. Then who this will, to who the notice is addressed. You are addressing this notice to who. Then whom. Finally details should be whom the notice whom. Final details should be whom to contact to get in touch with. So whom, in here you have to describe the person whom we can contact in case of any query. So look at the question. First we have, you are Sohan, a student of class 6th of DAV school New Delhi, has lost his wristwatch in the school premises. Write a notice for school notice board. सिंपली आपका सोहन है और आपने जो अपना रिस्ट वॉच जो है खो दिया है स्कूल के प्रेमिसेस में, आपको एक नोटिस लिखना है in about 50 words. So look at the format we have. First of all, the name of the issuing authority, DAV school. Okay. Then notice, it should be in capital. Then date, on the date you are writing notice, and then lost. If you have lost something, then mention lost, and if you have found something, then you mention found. So let's start with the content. So it is to inform all the students of our school. देखिए अब हमेशा जो है मोस्टली आपको कोई जो है नोटिस स्टार्ट करते वक्त इसी लाइन से स्टार्ट करना है. इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल दैट अ रिस्ट वॉच हैज़ बीन लॉस्ट इन द स्कूल प्रेमिसेस. की जो है एक जो रिस्ट वॉच खो गया है स्कूल के प्रेमिसेस में, एंड विच इज़ डिस्क्राइब बिलो. इसके बारे में जो है सब चीज़ लिखी हुई है. जस्ट कंपनी नेम, टाइटन, कलर गोल्डन, टाइप एनालॉग है, अगर डिजिटल है तो डिजिटल लिखेंगे और एनालॉग है तो एनालॉग. देन स्ट्रैप, इट शुड leather of brown color. Then whosoever find this watch may contact to undersign. A treat will be given to the finder. और जो भी उसे खोजेगा उसे जो है एक ट्रीट दी जाएगी. Then the signature, Sohan, class 6th. Now we'll learn. So this is all about the notice. If you have
lost something, you can follow the same performer and you can easily write a notice. Then now we'll learn how to write a notice if you have found something in the school premises. So you are Rohan of class 6 of ABC school and you have found a geometry box in the school library. Write a notice. So what you need to keep this while writing a notice based on notice, if you have found something, remember one thing, you know, you no need to you don't have to mention the full description of the things which you have found. Then what you need to do, just look, first of all, the name of the issuing authority, ABC school, then notice, and it should be in capital, then the date on which you are writing a notice, then found. Now see the first line, it is to inform all the students of our school that a geometry box is found in the स्कूल लाइब्रेरी में एक ज्योमेट्री बॉक्स मिली है एंड इट कंटेन्स ऑल द इंस्ट्रूमेंट, और इसमें सारे जितने भी मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे हैं. एनीबडी लॉस्ट इट मे कॉन्टैक्ट टू अंडरसाइन विद द प्रूफ ऑफ ओनरशिप. और अगर किसी की खोई है तो वो सीधा नीचे लिखे गए नाम पे कांटेक्ट कर सकता है विद द प्रूफ ऑफ ओनरशिप. मतलब उसे बताना होगा कि उसकी क्या क्या पहचान थी, तभी तो आप देंगे, या आप किसी को भी दे देंगे. तो दैट्स व्हाई इट इज़ नेसेसरी. So this is all about lost and found notice. In the next session we'll be learning how to write a notice based on event organized. Okay, thank you children.